This module is about a very recent declaration called Incheon Declaration. इसका background देखते हैं कि ये क्या है और इसके key themes क्या हैं. The World Education Forum adopted the Incheon Declaration Education 2030 towards inclusive and equitable quality education and lifelong learning for all on May 21st, 2015. So it is a very recent declaration. Over 130 education ministers and more than 1,500 participants were present at the forum. इसका background क्या है? The declaration builds on the Global Education for All movement that was initiated in Jomtien, Thailand in 1990 and reiterated in Dakar, Senegal in 2000. तो ये उसी की ही continuation है Education for All movement which started 25 years before. Education for All and the Millennium Development Goals on education resulted in significant progress, but many of its targets, including universal access to primary education, remain unfulfilled. बहुत सारे targets unfulfilled रहे, particularly related to Millennium Development Goals, और उसमें सबसे important target ये था कि access to primary education, सारे बच्चे जो हैं वो primary education में उनको access नहीं मिली. तो अगरचे बहुत सारी कोशिशें हुई हैं, but targets have not been achieved. आज की सूरत हाल क्या है? 58 million children are out of school and 250 million children are not learning basic skills. 58 million children पूरी दुनिया में वो हैं जो कि स्कूल में नहीं जा रहे, they are out of school. लेकिन जो इसी के साथ साथ 250 मिलियन बच्चे वो हैं जो स्कूल में तो जा रहे हैं, but they are not receiving quality education. They do not have basic skills. The Incheon Declaration must finish the ambitious EFA and MD agendas. जो इसमें कहा गया वो ये कि हमें जो भी ambitious agendas start किए गए थे इस declaration में कहा गया कि उनको हमें we need to finish those agendas. We have to complete those agendas. Implementation plan क्या था? The Incheon Declaration will be implemented through the Education 2030 Framework for Action, a roadmap for governments to be adopted by the end of the year. कि साल 2015 के इख्तिताम तक ये रोड मैप जो है तमाम गवर्नमेंट्स को अडॉप्ट करना है. It will provide guidance on effective legal and policy frameworks for education based on the principles of accountability, transparency and participatory governance. तो Dakar Framework for Action की तरह Incheon Declaration के अंदर भी accountability और transparent पार्टिसिपेंट गवर्नेंस के ऊपर फोकस किया गया. जो कि इसका इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाया गया उसमें ये कहा गया कि देयर शुड बी पार्टिसिपेटरी गवर्नेंस. Let's have a look on the key themes of this declaration. Right to education, equity in education, inclusive education, quality education, and lifelong learning. So these are the key themes of the Incheon Declaration. Right to education, declaration में कहा गया कि ensure equitable and inclusive quality education and lifelong learning for all by 2030. तो जो Millennium Development Goals थे उनको कहा गया कि वो अचीव किए जाएंगे 2015 तक. एजुकेशन फॉर ऑल जो 1990 का डिक्लेरेशन था उसकी भी कहा गया कि 2000 तक अचीवमेंट होगी, फिर 2005 तक कुछ टारगेट सेट किए गए और फिर 2015 तक. लेकिन ये देखा गया कि 2015 तक भी टारगेट्स अचीव नहीं किए गए. तो इस डिक्लेरेशन में ये कहा गया है कि अब ये सॉर्ट ऑफ न्यू विजन 2030 ऑफ एजुकेशन पूरी दुनिया के लिए बनाया गया. और अब जो टारगेट्स कहे जा रहे हैं कि इक्विटेबल एंड इंक्लूसिव क्वालिटी एजुकेशन एंड लाइफ लॉन्ग लर्निंग टू बी अचीव्ड बाय 2030. Education is basic right for everyone. Equity in education, equitable access and learning, particularly for girls and women, must stand at the heart of the post-2015 agenda to unleash the full potential of all people, including women and girls. Inclusive education,
An inclusive education not only responds and adapts to each learner's needs, but is relevant to their society and respectful of culture, a two-way dignified process. So इस declaration के अंदर inclusive education को भी कहा गया और ये उसके पीछे reason ये थी कि inclusive education is good for the whole society. It brings respect to the whole society too. Quality education provided by trained and supported teachers is the right of all children. सिर्फ ये नहीं है कि बच्चे स्कूल में जाएं, they need to be getting quality education. जो इसको redefine किया गया है actually कि education is not the right of every child, rather quality education is the right of every child. And it is not the privilege of the few. कि ऐसा नहीं है कि जो पेरेंट्स अफोर्ड कर सकते हैं वो अपने बच्चों को एजुकेशन, अच्छी एजुकेशन दिलवा सकें और बाकी के पेरेंट्स जो हैं वो अपने बच्चों को सिर्फ स्कूलों में भिजवा सकें. तो एक्चुअली इट इज़ नॉट अ प्रिविलेज, रादर अ राइट. Lifelong learning. Every person at every stage of their life should have lifelong learning opportunities to acquire the knowledge and skills they need to fulfill their aspirations and contribute to their societies. कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग का जो थीम है ये बहुत ज़्यादा पिछले कुछ सालों के अंदर उभर कर सामने आया है कि देयर शुड नॉट बी लर्निंग एटीट्यूड, देयर शुड बी लाइफ लॉन्ग लर्निंग एटीट्यूड. दुनिया बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है. जो इल्म 20 साल पहले सीखा गया था आज उसका रेलेवेंस उतना नहीं रहा. सो ये सिर्फ डिग्रीज के साथ इसका ताल्लुक नहीं होना चाहिए कि आपकी क्वालिफिकेशन है इट मीन्स यू आर नॉलेजेबल, बल्कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग में यू नीड टू कीप लर्निंग, यू नीड टू कीप चेंजिंग. तो इस थीम को भी इंचन डिक्लेरेशन के अंदर एड्रेस किया गया. Lifelong learning is about meeting the diverse and context-specific learning needs of all age groups, including the acquisition of basic literacy and technical skills through formal education and alternative pathways to learning. कि अगर formal education में आप कुछ नहीं भी learn कर रहे, there would be some alternative pathways. There is another framework for action. Bellum framework for action refers to lifelong learning as an organizing principle of all forms of education, not only formal education. The concept of lifelong learning requires a paradigm shift away from the ideas of teaching and training towards those of learning for personal development. कि focus जो है teaching और training के ऊपर नहीं होना चाहिए. There should be some intrinsic inner motivation to keep learning going on. Overall, we can say the Incheon Declaration is the most recent declaration adopted by the World Education Forum. The declaration includes 5 themes: right to education, equity, inclusivity, quality and lifelong learning. The most emphasized theme is of lifelong learning in this declaration.